Yes. Hello. Hello, everyone. Uh, Hello, Vishal, Biswajit, Adil, Amon. I suppose we have got four people join in. So let's wait for like 30 seconds so that other people join in as well. Meanwhile, you can just message others, whoever you are in touch with, so that they can join in on time. Okay. We'll start in 30 seconds, most probably. 30 seconds to 1 minute. Okay. So let's start. I suppose today's session is very beginners everywhere. It's for beginners as well as for every other person out there, right? So we have got today's session in the topic for today's session is that the time scale and the chart. What is the relation between the time and what is the relation between the time and the price chart, price action? So instead of roaming around here and there, we will just discuss what has happened in the previous week. And the previous week has seen lots of ups and downs. Yesterday, we saw United Kingdom GDP, and we saw that it was quite uh, the expected outcome. It was. I will just show it to you in some time. But the thing to note that is that everyone in the market is currently, uh, you know, they're waiting. Okay, they're waiting for the data, and market has become smarter in the sense that it anticipates. Okay, it anticipates different things, and it try. Many people try to take positions in that anticipation. Okay, but today's session will be for everyone from beginners to advanced traders. Advanced traders might feel that this might be some form of a revision for them, as well as the beginners will understand what to look for. Even advanced traders would understand what to look for and how to trade, and which particular time frame should one person be looking at while trading. So, again, welcome everyone. Thank you very much for tuning in to the live audience as well as to those who will be watching the replay of this particular live stream. So, let us start today's session with. Again, this session will include bilingual. Okay, yeah. So, this session will include bilingual instructions. Okay, so I'll be saying something in English, uh, which most of the times I'm comfortable in. And sometimes I will be shifting to Hindi in order to make people understand. Okay, those who are not very comfortable with the language, no worry about it because obviously I know Hindi as well. So बात यह है कि हम आज बाइलिंगुअल सेशन करेंगे. आज हम हिंदी में भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देंगे और हिंदी के जो श्रोता हैं, जो सुनने वाले हैं, वो हिंदी में प्रेफर कर पाएंगे इंस्ट्रक्शंस को, और जो इंग्लिश में चाहते हैं सुनना, उनके लिए भी ये इंग्लिश सेशन रहेगा. So obviously, both the languages, I will try my level best in order to maintain that form of consistency in both my languages. I hope the language center in my brain works really fine today. Okay.
So that I shift from English to Hindi and Hindi to English. So let's see what has happened in the previous week and yesterday. देखते हैं कि आज और कल में क्या डिफरेंसेस आए हैं, क्या चेंजेस आए हैं, क्या न्यूज़ आई है, क्या डेटा आया है एंड अकॉर्डिंगली हम जो मार्केट है उस पे क्या इम्पैक्ट आया है वो हम देखेंगे। ठीक है? सो पहले हम देखते हैं कि न्यूज़ डेटा किस तरीके से आया है, राइट? आज भी एक बहुत इम्पोर्टेंट डेटा है, आपके प्रीव्यू के लिए बता दें कि टुडेज़ इम्पोर्टेंट डेटा इज़ सीपीआई फॉर यूएसडी। सीपीआई थोड़ी देर में मैं आपको समझाऊँगा, पहले देखेंगे कि पिछले हफ्ते क्या हुआ ऐसा, बिकॉज़ हम मिले थे ट्यूसडे को एंड आफ्टर दैट वी मेट ऑन ट्यूसडे एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन अ लॉट ऑफ डेटा कम आउट एंड अ लॉट ऑफ मूवमेंट, अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी। इवन ऑन फ्राइडे अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी वाज़ देयर इन द मार्केट। तो ये वॉलेटिलिटी जो थी, ये सिर्फ डेटा की वजह से नहीं थी, बट बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो नई सिर्फ नई पोजीशंस ले रहे हैं बट अपनी पुरानी पोजीशंस भी साफ कर रहे हैं, दे आर कवरिंग देयर पोजीशंस। ठीक है? तो ये दोनों ही पोजीशंस की वजह से, ये दोनों लॉबीज की वजह से बहुत सारा वॉलेटिलिटी रहा। कंपैरेटिवली तो नहीं बोलूंगा कि हाँ किसी दिन बहुत ही छप्पड़ फाड़ न्यूज आ जाती है तो फिर वो अलग ही कहानी हो जाती है, बट द थिंग इज, whenever we are trying to understand news, we can't, compare news. Yeah, yes, this news had this much impact. This news had this much impact. Every news is an opportunity. That's all. Okay. And once we are a trader, we are an analyst or whatever we are a small investor. Still, हमको ये पता रहना चाहिए कि हमारा एंड गोल क्या है। ठीक है? कई लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं कि यार हम कौन सा एनालिसिस करें, क्या करें, कहाँ पे जाएँ, किस तरीके से सीखें इस चीज़ को। पर हम भूल जाते हैं कि हमें एंड गोल क्या है हमारा, हम क्या करना क्या चाहते हैं, ठीक है? हम क्या करना चाहते हैं, या तो शॉर्ट करना चाहते हैं, या तो लॉन्ग करना चाहते हैं, राइट? We we try to understand a lot of things, we try to inculcate a lot of strategies, we try to look at all the indicators there is, possibly everything, right? And then we try to, uh, you know, implement that perfection. But that is not the case usually in the market. Okay. Even if you long, there is a 50% chance that you will be correct, considering all things remain, straightforward. Okay. So other factors remain constant. So हमारा एंड गोल यही है कि या तो हम लॉन्ग करेंगे, our end goal is whether we long or whether we short. To reach on this particular decision, how much effort is required, that is also necessary. Okay. And whenever we look at news, we don't look at news, we don't look at what they are doing and how it is going to be. What obviously we are concerned with the economic, macroeconomic situation. Otherwise we won't be able to understand what is happening and what will be the long term effect of a particular policy. Okay. So this is the scenario that we need to look at news events as opportunities and nothing else. Okay. We don't need to get so much inside of it that we forget our end goal. Okay. We should never forget our end goal, because end goal is everything. Okay. Whether you're trading on any market, okay, on the stock market, in any financial market on the world, okay, your end goal remains in the bond market also. Whatever you are doing, even in the derivatives, there is a different scenario of calls and puts, but either ways you are going to long or short. That is the only situation. Okay. So that is our end goal. We don't need to put in so much of effort. Okay. Many people think that we need to look at everything, but no. Okay, we need to simplify everything. So let us see that what has happened, क्या हुआ है पिछले वीक। तो पिछला वीक काफ़ी स्लोली स्लोली स्टार्ट हुआ, राइट? आईएसएम सर्विसेज वाज वेरी गुड। ये एक तरीके का इंडिकेटर है जो बताता है कि फ्यूचर में किस तरीके का स्पेंडिंग हो सकता है, किस तरीके का आउटलुक है। ठीक है? तो सर्विसेज इंडस्ट्री जो है, सर्विस, देयर आर डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, राइट? एक सर्विसेज सेक्टर होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग होता है, एक प्राइमरी सेक्टर होता है,
फिर क्वाटरनरी भी होता है, क्वीनरी भी होता है, कई सारे होते हैं। लेकिन इसमें से सर्विस सेक्टर जो है, इट इज़ अपीयरिंग टू बी वेरी, वेरी स्ट्रांग ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, राइट? तो ये पीएमआई का डेटा आया था, इट वाज़ गुड एंड यूएसडी बम्प्ड अप, ओके। देन कैश रेट ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन रिज़र्व बैंक ने कुछ 25% 25 बेसिस पॉइंट से अपना कैश रेट बढ़ा दिया है और इनका जो अ, आरबीआई का गवर्नर है, गवर्नर लाउ, ओके। सो उनके स्टेटमेंट में वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है इट इज़ नॉट अंडर कंट्रोल एंड स्टिल वी कैन सी कि रेट हाइक्स हो सकते हैं इन द फ्यूचर, ओके। सो इस तरीके का आउटलुक है ऑस्ट्रेलियन डॉलर का कि हो सकता है कि आगे ये कैश रेट जो है ये बढ़ाते जाएँ और इस कैश रेट की वजह से थोड़ा-सा पुश मिलेगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर को बिकॉज़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर फिर एक्सपेंसिव होता जाएगा, है ना? सो अकॉर्डिंगली जहाँ पर भी बेस पेयर्स में ऑस्ट्रेलियन डॉलर आता है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट आएगा, राइट? वी विल सी इट ऑन द चार्ट। The GDP was under pressure obviously, right, of Australia. And then we saw again Canadian dollar on overnight was improved, okay, by 50 basis points. Then, okay, yes, this was something that came out and it had quite an impact. This is December 9, na? Okay. सो इसका क्या इम्पैक्ट आया कोर पीपीआई का? पीपीआई क्या होता है? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इज अगेन एन इकोनॉमिक इंडिकेटर व्हिच शोज इन्फ्लेशन, ओके, व्हिच मेजर्स इन्फ्लेशन एट होलसेल लेवल। जैसे इंडिया में डब्ल्यूपीआई है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। उसी तरीके से प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होता है इन द यूएस, ओके। सो व्हाट हैज हैपेंड इज इट हैज कम आउट टू बी हायर देन एक्सपेक्टेड, ओके। So again, this was something that has made the dollar float. Okay, I would say float because हालत थोड़ी सी अभी खस्ता है यूएस डॉलर की according to me. Later on, prelim consumer sentiment was very good. Let us see what will happen today. So yesterday we saw that GDP of Great Britain came out. ठीक है? And शायद मैंने 11 बजे के आसपास I've given my idea that it would be around and higher than expected GDP because of a lot of factors. Okay, you can see these factors here. You can analyze it later on. So a lot of factors are working, which has improved the GDP of Great Britain for this month. For this month on month है ना ये data. This is a month on month data. ठीक है? तो GDP जो है वो green में है. That is why GBP was also going up against other currencies. Okay. Now today this has come out to be negative. So again वो ranging market में चला गया है. Then we will see after we end here on 6:30 हमारा सेशन जो है ऑलमोस्ट अराउंड 6:30 एंड होगा. आधे घंटे या 1 घंटे बाद सीपीआई डेटा will come out and again there will be higher volatility for those who are trying to predict. Don't predict, okay? This data is not to be predicted. You can assume but you cannot predict. और कई बार ऐसा होता है कि हम प्रेडिक्ट करके बैठ जाते हैं एंड देन प्रेडिक्ट करने के बाद देयर इज एन एंजाइटी कि वेदर इट विल बी करेक्ट और नॉट. डोंट प्रेडिक्ट, यू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि वेयर द सीपीआई इज हेडेड इन यूएस, ओके. इन्फ्लेशन will come down because of a factor that I'm going to explain in a few minutes, few moments. So it will come down somewhat, okay, and we will see what will happen. Okay, nothing is completely guaranteed. Okay, in the markets, no matter how well versed you are, nothing is guaranteed. Okay, so let us begin our session today. Let us stop sharing this one. Get on to charts. एंड आज का जो सेशन हमारा है दैट इज रिलेटेड टू टाइम फ्रेम. ठीक है? आई सपोज एवरीवन कैन सी दिस. आई सपोज द टेक्निकल इशू कोई आ नहीं रहा है अभी एंड if everything is fine you can see the chart, you can hear my voice, just put up a thumbs up so that I know that everything is going on absolutely perfectly.
give a thumbs up on the chat box and just keep this tab open. Because if I go out of this tab, I cannot see whether what the comments are, what the chat you guys are putting up. Okay, all clear. Thank you very much. So yes, here we are. This is the chart of this particular commodity, right? And this is the 15-minute time frame. Let's just go on to daily. These are all the levels that are put up. I don't understand. It looks a bit choppy. That is what has happened after it went out of this particular trend, right? So almost okay, पूरा ही आ जाएगा क्या? Nice. Let it be. Let us just ignore all these lines because all these lines are very important for me. I will have to uh, make those big facts. So what kind of logic that I applied, I don't know. So yeah, so this the price action went out of this trend line, almost a year trend line, year long trend line, and we have seen an upside, very good upside. Many people have made very good money from 1675 to 1800. That is a good profitable range. This also was previously indicated from our team on market insights, and recently we have seen some form of resistance. So what is happening here is, again I will draw something and it will appear something. Okay, so I will just tell you what is going on. Okay, yeah. So it appears to be almost like a ranging pattern, and there is lower volatility today because the market is waiting. है ना, जब मार्केट वेट कर रहा होता है तो इस तरीके का कैंडल दिखता है हमें. ओके, यस्टरडे क्या सीन, यस्टरडे क्या हुआ था, यस्टरडे कुछ इस तरीके की पोजीशन बनी थी गोल्ड में, राइट? दिस वन, या. So Monday, right, it went all the way down. 10:30 somewhere around it achieved almost a hammer formation, right? Almost. Okay, again I'm not calling it a complete hammer by definition, but this is a very good candle. Okay, वेरी अर्ली रिवर्सल का सिग्नल है ये. बहुत जल्दी रिवर्सल जब हमको प्रेडिक्ट करना हो तो कैंडल स्टिक पैटर्न से बढ़िया आई सपोज कुछ नहीं हो सकता, है ना. एंड वी हैव सीन दिस एंड देन इट हैज वेंट अप अगेन. दिस लुक्स लाइक some candlestick pattern. I suppose you already know it. I have done the candlestick pattern video on this particular channel. You can go and check it out. Okay, you can go and check it out, and it is in English, I suppose. So no worries. We can at least understand what I'm saying. Okay, मैं क्या कह रहा हूँ वो इंग्लिश में है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने ड्राइंग वगैरह भी बना रखी है उस पे. सो थोड़ा तो आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि व्हाट इज दिस. ओके, वी विल ट्राई टू, हम ट्राई करेंगे कि आगे चल के हम हिंदी में भी एक सेशन करें. तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. ओके, कैंडलस्टिक पैटर्न से बहुत जल्दी रिवर्सल का पता चलता है. ठीक है. सो यहाँ पे हमने हैमर देख लिया, यहाँ पे हमने ऊपर एक टॉप बनता हुआ देख लिया, एंड द प्राइस इज वेंट डाउन सिंस देन. ओके, नाउ ओवरनाइट सिचुएशन में अगेन इट हैज वेंट अप, अगेन इट हैज कम डाउन. Going up and down, that means it is a ranging movement. Okay, you cannot predict these all these reversals on point. Otherwise, many a times we can predict it. Okay, but if I will draw something, then all the lines will appear. Okay, I'll just click on a highlighter. So just focus on my cursor. आप cursor को देखिए. मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा इसमें किस तरीके से प्राइस एक्शन या कैंडलस्टिक को समझ में समझ आता है. जैसे तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तरीके का एंगल्फिंग पैटर्न है. यहाँ पर भी एक एंगल्फिंग है. इट इज अ वेरी स्ट्रांग मूवमेंट अपवर्ड्स 345. ठीक है. सो इट इज अ अपसाइड मूवमेंट. ओके, अगेन दिस वन, this is not a proper engulfing, but we can see that there might be a downfall because the candle is strong. Okay, so again, uh, this one was hammer, we already saw. Okay, this is what will happen. Okay,
इस टाइप का एक फॉर्मेशन हो सकता है, लाइक 15 मिनट्स पे तो नहीं, बट लेट्स जस्ट गेट आउट ऑफ इट फर्स्ट. ओके, so these are the levels. ये जो levels हैं, I have provided it earlier on the group itself, and you can see how well they have turned out, and still they are going. Okay, still they are holding good. Again, the resistance has been hit on this line. Okay, अब ये किस लॉजिक पे बना है, I also don't remember. Otherwise, I would have told you. ओके, नो वरीज. बट आप देख सकते हैं किस तरीके से रेजिस्टेंसेस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है जगह जगह, है ना. यहाँ पे लिया है, यहाँ पे लिया है, राइट. Again, the resistance has been taken somewhere here, so we can draw another line somewhere here. Okay, this will be for our future reference. तो जब भी इस तरीके का डबल कंफर्मेशन पॉइंट मिलता है हमें एक प्राइस लेवल पे, तो वो हो सकता है कि एक अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट हो इन द फ्यूचर, यानी भविष्य में हमें वो काम आ सकता है ना. इस तरीके से ये काम चल रहा है यहाँ पे. इवन जो छोटे-छोटे लेवल्स हैं वो भी काम कर रहे हैं यहाँ पे. दिस वन हैज़ वर्क्ड एज़ अ सपोर्ट एंड देन इट हैज़ ब्रीच्ड डाउन अगेन. Now this has worked absolutely fine as a resistance. Then it went up, breached it, then it went slowly up. Okay. So everything is going really well. देखते हैं जीबीपी में क्या हुआ है कल. ठीक है. What has happened in GBP? Let's get on with it and see what has happened. So this was somewhere around 11 o'clock when I said ki there will be upside yesterday. Okay. Where is it? Yeah, there it is. So let us just take it up, put an arrow so that we can see it really well. And upside has come. Okay, upside has been like absolutely fantastic from somewhere around 1.22209 to 1.229. So outstanding difference, and काफी अच्छा अपसाइड मिला है यहाँ पे. ऑलमोस्ट ये रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, सपोर्ट लेवल हो सकता है. यहाँ पे एब्सोल्युटली फैंटास्टिक काम किया है यहाँ पे. बट this appears to be a resistance now. Okay, okay, this position, ये जो पोजीशन दिख रही है हमें, ये प्राइस लेवल जो है ब्रीच होता दिख रहा है अभी. जस्ट लाइव मार्केट पे हम देख रहे हैं, इट इज ऑलमोस्ट ब्रीचिंग. ओके, सो दिस इज अ पोजीशन अगेन, बट वो where will it close, that is the question. Okay, will it close, will it close above, that is the question. Okay, जब क्लोज करेगा, एक दो और कैंडल यहाँ पे सपोर्ट ले लेंगी, then we can say कि yes, there is an upside possible. Okay, but again, news का मामला है, so we need to be very aware. So what is the news, correct? So GBP USD का हमने बात कर लिया. अभी हम आते हैं हमारे टॉपिक पे. थोड़ा सा चेंजेस रखा है मैंने. आई हैव नॉट यूज्ड एनी प्रेजेंटेशन टुडे. आई एम नॉट यूजिंग एनी प्रेजेंटेशन फॉर टुडे बिकॉज it is a very obvious topic, but yet it is very okay. Yeah. So, time and price chart relation is an obvious topic. Okay, everybody knows what is time, how it impacts us while trading, but nobody understands the actual relationship. क्या relationship है टाइम में और प्राइस में, किस तरीके का रिलेशन है. हम जब ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें क्या रिलेशन आना चाहिए, उसमें कौन से फैक्टर्स, उसमें कौन से क्राइटेरिया ढंग से काम करने चाहिए, तब जाके हमें उसमें कुछ फ़ायदा हो सकता है या कोई अपॉर्च्युनिटी हमें मिल सकती है, राइट? सो अगेन वी विल सी दिस दैट दिस समवेयर इट इज़ गोइंग अप, बट इट शुड क्लोज अबव दिस लाइन. ये क्लोज यहाँ पे होना चाहिए. 1-2 कैंडल्स यहाँ पे बन के शायद इधर सपोर्ट ले ये लाइन पे, एंड देन इट माइट गो अप. ओके, लेट्स सी. तो चालू रखेंगे हम ये चार्ट सो दैट वी कैन, बिकॉज़ इट इज़ अ 15 मिनट टाइम फ्रेम. लेट्स गो डाउन. ओके, इट इज़ ऑलरेडी कवर्ड. So let us see what will happen. Okay, क्या होता है इसमें ये भी देखेंगे हम, और टाइम फ्रेम का भी देख लेंगे क्या सिचुएशन. सो कोई भी, एवरी 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 मार्केट एंड एवरी पर्टिकुलर asset, every security in the market, every bond, every asset, okay,
has two very important criterias. Two criterias. Okay. First one is price, and the second one is time. कोई भी एसेट हो, कोई भी सिक्योरिटी हो, कोई भी स्टॉक हो, बॉन्ड हो, ठीक है, करेंसी हो, कोई भी टाइप का चीज हो, उसके दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहते हैं। एक तो उसका प्राइस और दूसरा उसका टाइम। ठीक है, तो यूजुअली जैसे हमने पहले स्केल और प्राइस चार्ट जो पिछला मैंने सेशन लिया था लास्ट ट्यूसडे को, उसमें हमने टाइम के बारे में स्केल के बारे में बात किया था, विच मीन्स प्राइस स्केल के बारे में, दिस वन। आज हम यहाँ वाले की बात करेंगे, द टाइम। ओके, दिस इज द टाइम, टाइम लाइन। ओके, सो ये दो जो फैक्टर्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर एनी एसेट व्हाटसो एवर। ओके, अब जब हम प्राइस की बात करते हैं, प्राइस ऑब्वियस चीज है, प्राइस इज डिपेंडेंट अपॉन सप्लाई एंड डिमांड। ओके, वेरी सिंपल, कीप इट सिंपल। ओके, डोंट ट्राई टू ओवर कॉम्प्लिकेट इट बिकॉज वी वोंट बी मेकिंग सेंस वेरी मच। ओके, सो प्राइस में ये फायदा है कि हमको सिर्फ ये समझना है कि सप्लाई और डिमांड पे बेस्ड है। और हाँ, प्राइस के साथ साथ आई फॉरगॉट टू राइट वन थिंग, along with price there has to be a factor called volume. Okay, volumes are very very important. Okay, कभी हमने देखा कि ये ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पर, राइट, बट द वॉल्यूम्स आर slowing down, that means it is a false breakout, right? That has been put up as a reel on this particular channel. You will get to see how it actually works. Previously एक गोल्ड का जो प्रोसेस था, उसमें ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट लग रहा था कईयों को, और नहीं हुआ था पिछले शायद 2-3 महीने पहले, 1 महीना पहले आई सपोज। और अब जब हुआ है, तब उसमें किस तरीके का डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों में डिफरेंस है वॉल्यूम का। अभी वाला सक्सेसफुल हुआ बिकॉज वॉल्यूम वाज हायर एज कंपेयर टू प्रीवियस फॉल्स ब्रेकआउट, है ना? तो ये तीन जो फैक्टर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमें इन तीनों से ही लेना देना है, इन तीनों का ही काम है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में। तो टेक्निकल एनालिसिस में these three are the most important factors. Based on these three, okay, just give me a moment. अच्छा, based on these three are other factors. Okay, जो आप इंडिकेटर लगाते हो चार्ट पे, है ना? इट इज बेस्ड ऑन प्राइस, इट इज बेस्ड ऑन वॉल्यूम। ठीक है, इट इज बेस्ड समवॉट ऑन टाइम ऑल्सो, बिकॉज टाइम फ्रेम के हिसाब से प्राइस डिसाइड होता है, क्लोजिंग, ओपन, हाई, लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिस पे कैलकुलेशन किया जाता है, राइट? अब हम देखेंगे प्राइस का क्या फैक्ट, क्या फंडा है, प्राइस में क्या क्या चीजें हैं। प्राइस में चार चीजें इंपॉर्टेंट है, OHLC, और वॉल्यूम भी लिख लेते हैं, वी, राइट? सो दीज आर द फोर फैक्टर्स जिस पे सब कुछ डिपेंड करता है। पहला तो OHLC, दैट इज, पहला इज ओपन, द फर्स्ट वन इज ओपन, सेकंड वन इज हाई, थर्ड इज लो, एंड फोर्थ इज C, दैट इज क्लोज। जैसे हिंदी में बताएं तो OHLC मतलब ओपन, हाई, लो, क्लोज। ओपन मतलब कहाँ पे कैंडल ओपन हो रहा है, शुरू हो रहा है, राइट? नाउ यू कैन सी हियर it has opened just above this particular price level, right? Which high it has made? Now this high it has made, very very small wick you can see because it has just opened up, है ना? कुछ सेकंड हुए, 30 सेकंड, 35 सेकंड हुए इसको, इस कैंडल को ओपन हुए। तो ये जो है अपर विक दिख रहा रहेगा, आपके कर्सर की लाइन देखना मेरी, तो इसको हाई बोलेंगे, राइट? एंड जो लोअर विक है वो भी थोड़ा सा छोटा सा बना हुआ है, दैट इज लो। नाउ इट हैज कम डाउन, राइट? जो 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 प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, दैट इज द क्लोजिंग प्राइस। अंडरस्टूड? ये जो ऊपर नीचे दिख रहा है ना हमको, अभी ग्रीन हो गया, थोड़ी देर पहले रेड हुआ था, दैट इज द क्लोजिंग प्राइस ऑफ दैट कैंडल, राइट? तो ये OHLC है। ये कब क्लोज, कब मटीरियलाइज होगा, राइट? कब मटीरियलाइज होगा? जब ये कैंडल फिनिश हो जाएगा। फिनिश हो जाएगा मतलब ये जो टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं 15 मिनट्स का, राइट? ये 15 मिनट्स जब खत्म हो जाएंगे, यू कैन सी हियर 13 33 seconds, 13 minutes and 30 seconds are remaining for this candle to close, right? तो ये पोजीशन हमें दिख रही है, राइट? अभी हम बात करेंगे एक इंडिपेंडेंट फैक्टर की। ये तो सब डिपेंडेंट हो गया, प्राइस इज डिपेंडेंट, मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि प्राइस इज डिपेंडेंट अपॉन
सप्लाई एंड डिमांड, राइट? जैसा सप्लाई होगा, जैसा डिमांड होगा, उसके हिसाब से प्राइस डिफाइन होगा। और प्राइस जैसे-जैसे हम इस पे देखेंगे, वैसे-वैसे प्राइस चार्ट बनता जाएगा। बट इस सब में एक ऐसा वेरिएबल है, अब वेरिएबल को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बट आप समझ लीजिए कि वेरिएबल मतलब एक तरीके का प्रोसेस में जो है, जो प्राइस चार्टिंग के जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसमें एक तरीके का एक फैक्टर है, राइट? तो टाइम है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ओके? इंडिपेंडेंट। What is independent? I have called time as an independent variable. I have called time as independent variable. What do I mean by that? I mean that time is not dependent upon supply and demand. It is not dependent upon something. Okay, it is not dependent upon volume. It is not dependent on anything in the world. Okay, मेरा कहने का मतलब है कि टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे निर्भर नहीं है, ठीक है? राइट? टाइम को चलते ही रहना है ऑब्वियसली, उसको कोई रोक नहीं सकता। देयर इज अ फ्लो ऑफ टाइम, देयर इज अ कंटिन्यूटी ऑफ टाइम, राइट? तो ये जो कंटिन्यूटी है, ये जो एक फ्लो है टाइम का, बहना है, वो कंटिन्यूअस रहेगा। इसके लिए उसको किसी चीज पे डिपेंड करना तो है नहीं, राइट? अभी ये जैसे ही 15 मिनट्स कवर कर लेगा ये कैंडल, ये अपने आप क्लोज होकर सेकंड कैंडल ओपन हो जाएगी, राइट? तो टाइम रिमेन्स इंटैक्ट, द प्राइस मूव्स, राइट? इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट वेरिएबल है भाई, तो सबसे इंडिपेंडेंट है ये, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा प्राइस चार्ट से, ऑब्वियसली इसको फर्क नहीं पड़ रहा। बट time is different and time frame is different, okay? Now we will understand, in order to understand time frame, we will go back to the daily chart, okay? Okay, we have done so much of things on this. Arey wow, okay, I have not seen this. Okay, let it be 4 hours only. We need a smaller frame here. Okay, good. Time is independent. Time has to be independent. There is no other reason. Okay. Time flows. Time does not depend upon supply and demand. It does not depend upon any other factor in the whole universe. Okay. Except for अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कह दिया था कभी जिंदगी में कि टाइम इज रिलेटिव। ओके, देयर वाज प्रीवियसली, हाँ वो बहुत सारी बातें करूंगा अगर साइंस की, तो आप लोग बोर हो जाएंगे। खैर कोई बात नहीं। टाइम जो है एक इंटरवल में बांटा गया है, इंटरवल। टाइम हैज बीन कन्वर्टेड इनटू इंटरवल्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मार्केट प्रॉपर्ली, ओके? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन प्रॉपर्ली, ठीक है? टाइम के साथ में क्या किया लोगों ने, टाइम को अलग अलग सेक्शंस में बांट दिया। जैसे एक दिन हो गया, एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया, एक साल हो गया, राइट? ये क्या हो गया है, एक टाइम फ्रेम हो गया, फ्रेम, जिसमें हम प्राइस को देखते हैं, राइट? The time frame is basically the frame in which we see the price chart, in which we see the price action. Understood? Simple to understand, very simple, right? So time जो है वो independent variable है, but what we have done for our convenience is that we have broken it down, right? We have broken it down in such a way that it will be helpful for us to analyze the price action, right? अभी हम समझ लीजिए मंथली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, ओके? ये मंथली टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं, बट समझ लीजिए यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, ये कुछ लिखा ही नहीं है, यहाँ पे टाइम फ्रेम दिया ही नहीं है। जैसे एक चार्ट होता है, उसको बोलते हैं पॉइंट एंड फिगर, इसमें टाइम है ही नहीं। आप क्या इससे समझ सकते हैं बताइए मुझे, क्या समझ में आ रहा है इसमें? इसमें टाइम है ही नहीं नीचे, ये सिर्फ टाइम फ्रेम ऐसे नाम के लिए यहाँ पे ईयर्स लिखे हुए हैं, राइट? ये मंथली टाइम फ्रेम का एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसमें टाइम यूज नहीं होता है, टाइम इज नॉट यूज इन पॉइंट एंड फिगर, ओके? लेट्स गेट बैक टू आवर नॉर्मल थिंग, right? We need to understand something from the price chart. We need to understand the trend of the price chart. हमको ट्रेंड समझना है प्राइस एक्शन का, कहाँ जा रहा है प्राइसेस। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बांटना पड़ेगा टाइम, और उस बटे हुए टाइम में जो प्राइस एक्शन हुआ है, जो ओ एच एल सी हुआ है, आई हैव अंडरस्टैंड, आई मेड यू अंडरस्टैंड ना व्हाट इज प्राइस। प्राइस इज नथिंग बट ओ एच एल सी, राइट? ओ एच एल सी जो वो टाइम में हुआ है, वो टाइम फ्रेम में हुआ है,
उसको हम टाइम फ्रेम कहते हैं, या फिर हम डेटा इंटरवल बोलते हैं, चार्ट इंटरवल बोलते हैं, राइट? कुछ भी कह सकते हैं आप, जो मर्ज़ी आए वो, ठीक है? जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड टू यू एंड इंट्रोस्पेक्ट ऑन इट। इट अपीयर्स कि बहुत सिंपल सी बात बता दी, ओके, बहुत सिंपल बात बोल दी। इट अपीयर्स, जस्ट इट अपीयर्स, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। लुक एट दिस, ओके, हो गया, राइट? They have come back down. Okay, that is why we need to wait for confirmation. है ना? Time teaches patience. Okay, because if we won't have been patient for 7 minutes, okay, 7 8 minutes, and we would have taken a position here, kept a stop loss somewhere here, then we are doomed. Okay, so this is the scenario, right? टाइम फ्रेम हो गया हमारी बात, ये चल समझ में आ गया होगा। आई सपोज एवरीबडी अंडरस्टूड व्हाट इज चार्ट इंटरवल। ओके, now let's change the chart. Let's get on to a normal stock chart. Okay, let's choose this one. Okay, now here, whatever data intervals are there, these are time frame: 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 4 hour, daily, monthly. You can select this drop down and you can go in with all these factors, all these time frames. Everything is under your control. Okay, there was a time when people used to take OHLC every single tick by tick, and then they used to make it by hand, these price charts. Okay, एक ऐसा समय था जब लोग प्राइस उठाते थे एक्सचेंजेस से, और उसको मैन्युअली ये प्राइस चार्ट बनाते थे, मैन्युअली बार चार्ट बनाते थे, राइट? लाइक आई यूजुअली टॉक अबाउट मुनहिसा होमा, राइट? पिछली बार हमने बात किया था मुनहिसा होमा के बारे में। तो उन्होंने ये कैंडलस्टिक चार्ट जब बनाना शुरू किए, खुद से बनाया उन्होंने हाथों से, राइट? बट नाउ वी हैव गॉट द एब्सोल्यूट लिबर्टी, आई वुड से एब्सोल्यूट the advantage from the computers and from the technological advancements कि ये हमें ऑलरेडी बना के मिलता है, राइट? हमें कोई भी ये सॉफ्टवेयर पे, जो भी मॉडर्न चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे इस तरीके का चार्ट मिल जाता है। वॉट एवर वी सिलेक्ट, मंथली, डेली, 4 hours, वॉट एवर, राइट? So this is the scenario. Now let us take up 1 hour time frame, right? Now if you can see, where are we now? Friday. This is Monday, right? Monday started on this particular candle. Since it is an hourly candle, it starts at 9:15, which is the timing of the. Just give me a moment, okay? Yes. So in this process, we can see that time frame has been changing every hour. Look at this. Look at the down somewhere here. Okay. We see Monday, 12th December 2022, 9:15. Okay, 9:15, then 10:15, then 11, 12, 15, 13, 15, 13, 15. That means 1:15. 2:15, 3:15. Okay, next we see next day, right? So this is the hourly candle of a stock, okay, of this particular stock, any stock in this particular exchange, right? तो ऐसी कहानी है इस पर्टिकुलर स्टॉक की, राइट? अभी ऐसे ही हम अगर कोई दूसरा स्टॉक ले लेते हैं, जैसे कि दूसरे पर्टिकुलर एक्सचेंज पे काम करता है, बट द सिनेरियो इज द सेम। इफ यू चूज 1 hour, it will be 1 hour time frame for every single day, okay, for every single time there is. Now Tuesday, let's come up to this particular point. Okay, we'll see it start somewhere after 7:30. So 7:37, and somewhere around that time, the American markets will start. It is currently off. Okay, it is currently off. When will it start? So it will start somewhere around 9:30 in the evening. Okay, so this is the chart. This is the time frame. Now let us understand what happens if the price and the markets, the price action and the time
what is the relation between these two? Okay, the relation between the time frame and the price is that, sorry, the thing we were on, let's get on to that only, this one, right? Time is independent and the price is dependent. So time is a stronger variable, price is a uh, weaker variable when compared mathematically, right? But when understanding both these variables, it is important to look at price chart even more so than the time. Okay, टाइम फ्रेम क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हमें ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा पावरफुल वेरिएबल होगा, है ना? हमें टाइम ज़्यादा देखना चाहिए। बट ट्रेडिंग की जब बात आती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेडिंग में हमें प्राइस को ज़्यादा देखना है, राइट? इवन दो टाइम फ्रेम्स मैटर। टाइम फ्रेम्स किस तरीके से मैटर करते हैं, वो अब मैं आपको बताता हूँ, राइट? सो let me put up a very good chart somewhat. Let us try this. There is a time frame, okay, and there is a time horizon, right? There is a time frame, there is a time horizon. What is horizon? Horizon, we usually say कि if you are standing on a beach, you see the almost the ocean where it almost appears as if the water is touching the sky, right? That point is called horizon. That point is a singular line if you are standing on a beach, right? And there is no island or something like that in between. So horizon उसको बोलते हैं. But what is the time frame and what is the time horizon? If I am selecting 1 hour here, how much data is appearing on my screen? How much data is appearing on my screen? This is called time horizon. Okay, how much data can be fit onto my screen when I'm selecting this time frame is called time horizon, right? Understood? I suppose everything is clear and no troubles in hearing and all that. Okay, done. Time horizon is how much data from what point to what point am I able to see the price chart. This is time horizon. Why is time horizon important? Because we can just drag onto different things. We can just drag here and there and we can see everything. But when we are looking at the chart at once, let's say we are glancing, we are looking at the chart at once, it is important if I have drawn some levels, I will have to check where these are functioning really well, where these levels are functioning really well. Now, these levels won't be appearing really well if I'm selecting 1 hour because I have made it on a 15-minute time frame. So here maybe you can see how well it has worked. Okay, how well it has worked. It may be seen. Okay, so this is the scenario. Why time horizon is important? Because time horizon will make you understand. Okay, let's open up another one. टाइम होराइजन से हमको क्या पता चलता है? टाइम होराइजन से क्या डिफाइन होता है? टाइम होराइजन से डिफाइन होता है इन्वेस्टमेंट होराइजन. ठीक है ना? व्हाट इज इन्वेस्टमेंट होराइजन? इन्वेस्टमेंट होराइजन इज नथिंग बट कितने टाइम के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, राइट? किसी भी चीज में, राइट? इफ यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन एक दिन के अंदर का होगा. अगर आप स्कैल्पर हैं तो शायद 15 से आधे घंटे तक का होगा आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन, या उससे भी कम, राइट? अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो 15 दिन से लेके 3 महीने तक का होगा, राइट? अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो 3 महीने से 6 महीने या साल भर का होगा. अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना होगा? आपका 5 साल होगा मिनिमम, 10 साल होगा, राइट? सो दैट इज डिफाइंड बाय टाइम होराइजन एंड टाइम होराइजन इन टर्न इज डिफाइंड बाय टाइम फ्रेम. अंडरस्टूड द रिलेशन, right? Now I will give you a very good exercise in order to understand all these three in one go, right? I suppose there is no trouble, na? Okay. So yes, this is the scenario. Time frame से टाइम होराइजन डिफाइन हो रहा है, दिखने दिखना कितना है इसमें डेटा,
that has been defined by टाइम फ्रेम, राइट? एंड टाइम फ्रेम से, टाइम होराइजन से हमको कितना दिखाई दे रहा है, उससे डिफाइन हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट होराइजन हमको क्या करना है, राइट? Everything is dependent upon time frame. Time frame here is the basis of all these two, of both of these, right? Obviously. Now let us take an example. If I'm selecting, say for example, daily time frame, let us clear everything up. Otherwise it would appear very messy. Okay, I'm just keeping it on auto. This much data is appearing. So what is the time frame and what is the time horizon in this case? ठीक है, तो टाइम फ्रेम क्या है इसका? डेली, ऑब्वियसली। बट इसका टाइम होराइजन क्या है? टाइम होराइजन है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3rd of March till today, right? So it is from March the data is being shown to me, and at what time it is ending? At today's time, right? You can't see this because it is over this particular thing, okay? But this is the data. Time frame is 1 day. Time horizon is somewhere around from, okay, I'll just somewhere around February, March to today. So what is the meaning of this? If we are selecting daily time frame, इसका मतलब क्या हुआ? What is the meaning of daily time frame? How much time horizon does the daily time frame cover? That is the answer for this particular question. Time horizon covered is somewhere around February. That means 8 months. Somewhere around 8 to 9 months has been covered in a daily time frame. Somewhere around 8 to 9 months is being covered, right? 8 to 9 months. If I'm stretching it a little bit else, then I can see a whole year. Okay. If I'm shrinking it, so I can see a whole year. So 1 day time frame gives us a time horizon of a year. Okay. This is obviously visible. Okay. This is really well. It is understandable as well. It is very clear as well. Now I will show you why I have drawn this particular resistance, because there was a double top formation somewhere here, and this was the resistance. And again, the resistance is working superbly well. Now people say that fundamental analysis only works in long-term analysis. Explain this to me then. Okay. Many a times we say that, okay, for this particular thing to work, I should be, doing some form of fundamental analysis, some numerical, and this and that, and so much. Just by looking at the price chart, I see that there is a double top. Okay, I'm just straying away from our topic. हम थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं अपने टॉपिक से, बट आपको ये देखना ज़रूरी है। यही यही मैंने शायद आइडिया लगाया था, एंड दिस इज व्हाट आई हैव सीन, एंड दिस रेजिस्टेंस हैज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस राइट नाउ एज वेल। ओके, दिस वाज अ स्ट्रेट आउट डबल टॉप, एक डबल टॉप फॉर्मेशन था, राइट? The prices went down swiftly. Okay, this was the neckline. Again, this one appeared to be a support. ये सपोर्ट बन गया यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट का काम किया इसने, राइट? अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमको पता चलेगा कितनी बार इसने सपोर्ट का काम किया है, राइट? दिस पर्टिकुलर लाइन, एंड दिस हैज बीन एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन से आई हैव कंक्लूडेड सो मेनी थिंग्स, बट राइट नाउ इट इज ट्राइंग टू पुश अप फर्दर। Okay, it's trying to get out of this resistance. Will it be successful? That time will tell. Correct? That is what we are understanding today. So this is the situation now. Time frame से टाइम होराइजन डिसाइड हो रहा है। अभी टाइम होराइजन से इन्वेस्टमेंट होराइजन कैसे डिफाइन होता है, अभी उसको जानने से पहले वी विल सी a very good option that appears in almost every charting mechanism. I suppose it is available on others also, as it is available on this particular platform, right? What is that option that I'm talking about? I'm talking about this little thing here. I suppose everybody can see my cursor and everybody can see this. So it is again 1 day. 1D means 1 day. 5D means 5 days. 1 month, 3 months, 6 months. This YTD. Now, what is YTD? What is YTD?
YTD is year to date. Okay, right? Now, if I put up this here, it is 3rd Jan that has been appearing. Okay, year to date. Year, okay, that's no worries. Let's hang up. Okay, will come somewhere around. Okay, ईयर टू डेट मतलब एक साल पहले तक का जो डेटा है, एक साल पहले फ्रॉम टुडेज डेट, that will be counted, that will be shown. Now what is this tab here, what is this doing here, right? What is this doing here? This is nothing but time horizon. Okay, here it is time frame, here it is time horizon. What a wonderful thing, what a wonderful thing we have been completely ignoring for a very long time, right? टाइम फ्रेम तो हम कर लेते हैं, तो देख लेते हैं ऊपर नीचे आगे पीछे, राइट? बट ये नहीं देख पाते हम, राइट? ऑल्दो टाइम फ्रेम से ये डिसाइड हो रहा है, बट इससे भी तो हमें इन्वेस्टमेंट हॉराइजन का पता चलेगा ना, इससे हमें इन्वेस्टमेंट हॉराइजन का पता चलेगा. नाउ वी विल सी कि व्हाट आई एम क्लिकिंग ऑन टाइम हॉराइजन एंड व्हाट टाइम फ्रेम इज कमिंग. ओके, so let us select first one day. Now look at this chart. It is not visible. If I will click on auto, then it will be visible. Now look at this time frame. What time frame has been selected? Time frame selected is 1 minute. Okay, मतलब जब मुझे एक दिन का डेटा देखना है, तो मुझे प्राइस इंटरवल कौन सा देखना होगा, कौन सा चार्ट इंटरवल देखना होगा, कौन सा देखना होगा? ऑब्वियसली मुझे 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखना होगा, तब जाके मुझे एक दिन का डेटा मिलेगा. नॉट थिंकिंग अबाउट इट, लुक एट दिस. 13th of December, it has just started on this particular time, 3 o'clock in the night. Okay, Tuesday. Now it has started, and it is 1 day's data, right? Time horizon, time frame. Understood? Now let us select 5 days. 5 days, why 5 days is written instead of 7 days? Are these guys stupid? No, obviously not. Because most of the financial markets, almost every financial market stands to work 5 days a week. Okay. Now it can be continuous 5 days, that is 24 by 7, or it can be 6 hours or 7 hours a day for 5 days. Understood? तो स्टॉक्स की बात करें तो 6 से 7 8 घंटा जो है वो एक दिन में चालू रहता है, बाकी बंद रहता है, राइट? वो भी 5 डेज़ के लिए ही रहता है. ऑलमोस्ट टॉकिंग अबाउट इंडियन एक्सचेंजेस, एनएसई एंड बीएसई, इट वर्क्स फॉर 5 डेज़, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, okay, this is the weekly. Okay. What we can consider year till date? Very good, Kevin. Yeah. Again, what we are talking about here? This one. So, 5 days. Why it is 5 days? Because 5 days represents a week. Okay. So instead of one W, they are writing 5D. Correct? So this 5D is very important. Because 5D, when I'm selecting 5D, let us see what will happen to the time frame. Okay. Time frame that is selected by default, I've just selected 5D, is 5 minute time frame. So if I want to see the data, अगर मुझे डेटा देखना है 5 दिन का, I want to see the data of 5 days, then what time frame I should select? I should select 5 minute time frame. अगर मुझे 5 दिनों का देखना है, एक हफ्ते का मुझे डेटा देखना है, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा, राइट? 5 दिन is appearing very, you know, uh, crunchy, right? It is very, uh, everything is shrunken. Let us widen it a little bit, right? So at least मुझे 2-3 दिन का डेटा देखने मिलेगा, right? 3 से 4 maximum. So it starts from somewhere Friday, and it is today, right? Great. Now let us select another time horizon. 5 days, 1 week. Okay. Why 5 days? I have already made you understand that particular thing. Now 5 days is an exception for crypto market. Okay, crypto works 24 by 7, purely 24 by 7. Okay, so the transaction mechanism is very fast in crypto, and it never stops because it is completely digital. Okay, and it is distributed network. So ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर सर्वर पे अटैक हो गया, कुछ हो गया तो क्रैश हो जाना है पूरा सिस्टम. ऑब्वियसली नॉट.
It is a complete network of computers. There are different nodes in a Bitcoin network or in a cryptocurrency network. So it continues. Okay, it continues for a long time and is continuously working 24 by 7. Okay, there might be some maintenance timing, but that only will be the exchange ka maintenance timing. It won't be cryptocurrency ka timing. Okay, maintenance. It will be the exchange ka maintenance. Now, if I'm selecting 1 month time horizon, what time frame will be selected by default? Let us see. तो अगर मुझे 1 मंथ का डेटा देखना है, मुझे कुछ इस तरीके से 30 मिनट का टाइम फ्रेम दिखा रहे हैं ये लोग, राइट? 30 minute का time frame. Now this is obviously by default. This is the computer that is showing me. Again, 1 month, the 30-minute time frame is being shown. Correct? Let's go on to 3 months. Now it has gone out of picture. 3 months, if I'm selecting, that is quarterly data. Quarterly. 3 months is nothing but quarterly data. Then 1 month time frame is getting selected. 6 months, if I'm selecting, then what is getting selected? 2 hours. Okay. Now, did you notice something? Some relation, why I am doing such a simple exercise which you can do on your own? Why am I doing? Okay, right? Everybody is everybody is gone out somewhere, but the 10 people that are watching and those who are going to replay this video, why am I doing this? Can you just get a relationship of what I have done just right now? When I'm selecting 3 months, what time frame is getting selected? 1 hour. Okay, when I'm doubling it, when I'm going from a quarter to the सेमी एनुअल डेटा, राइट? मैं जब क्वार्टरली डेटा से सेमी एनुअल डेटा पे जा रहा हूँ, मतलब दोगुना टाइम होराइजन देखना चाह रहा हूँ, तो टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है? व्हाट चेंज इज इन टाइम फ्रेम फ्रॉम 1 आवर टू 2 आवर्स? करेक्ट? अंडरस्टूड? दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू, नथिंग एल्स आउट ऑफ इट. If I'm selecting 1 year, right, it will be daily time frame that has been shown, right? This is the scenario, correct? So this is the simple understanding of time frame, time horizon. What about investment horizon? We've got very few time left on our clocks. बहुत कम समय बचा है, बट एक आइडिया दे दूं जो सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया है. टाइम होराइजन से इन्वेस्टमेंट होराइजन को कैसे समझा जाता है, राइट? या अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं, आपको कौन सा टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना चाहिए? आप अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आपको कौन सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए? या आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, या स्कैल्पर हैं, या किसी तरीके का आप लेयरिंग करके आप ट्रेडिंग करते हैं, राइट? तो आपको क्या करना चाहिए? कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट सूटेड रहेगा, करेक्ट? दिस इज डेली टाइम फ्रेम. और डेली टाइम फ्रेम इज अ वेरी वर्सेटाइल टाइम फ्रेम. डेली टाइम फ्रेम जो है बहुत वर्सेटाइल है, बहुत वर्सेटाइल. अब आई डोंट नो व्हाट इज द हिंदी प्रोनाउंसिएशन, आई एम रियली सॉरी, ऑफ वर्सेटाइल, बट समवेयर अराउंड I would say this particular idea is, wait a second. Okay, done. So this one, इन्वेस्टमेंट हराइजन जो है आपका, जैसे मैं 15 मिनट के लिए ट्रेडिंग करना चाहता हूँ या एक दिन के लिए ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, एक दिन में कवर कर लूंगा पोजीशन, या मुझे समझ लो 3 महीने तक मेरी पोजीशन खड़ी रखनी है. आई हैव टू होल्ड ऑन टू माई ट्रेड. And if I want to be a long term investor, I want to invest in a company, I want to invest in a particular bond or a stock or a currency for more than 5 years, for more than 10 years, what thing should I look for? What time frame or what time horizon I should look at, right? Now the answer appears very simple, right? For 5 year, if I'm a long term investor, it should be 5 years, right? It appears very simple. That it is, yeah, it is very simple. This is obvious that something of this sort I should select 5 years, which means what time frame? The weekly time frame. Okay. Now this is the investment horizon. If your investment horizon is 5 years, then you must not select 5 years. Okay. You must select 5 years plus a time frame above it. Okay. So 1 week and 1 month. You must look at both of these, right? So एक
जो आपका टाइम फ्रेम है, समझ लीजिए इंट्राडे ट्रेडर है आप, यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर, ओके, you trade at 1 minute time, okay, you select 1 minute charts because you need to, get out of your position very quickly, or you are a scalper, you need to just get some few pips in difference and get out of the position, okay, you are not worried about what to do, what not to do, okay, what to do in that situation, which time frame to select. आप स्कैल्पर हैं, आपको क्या करना चाहिए, कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए बेटर रहेगा, आपको छोटा सा पोजीशन लेके थोड़े पिप कमा के आपको निकल जाना है साइड में, राइट, तो उसके लिए क्या करना है, तो आपके लिए यहाँ पे 1 डे अगर टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हो, then a minute appears above, right? That means most of the people who want to do intraday trading, who want to do scalping, they choose 1 minute time frame by default. They want to trade on 1 minute. But my tip, my whatever understanding I have is that you must look at 1 minute as well as 3 minute and 5 minute, right? अब देखिए जैसे ही मैंने 1 minute सिलेक्ट किया, I cannot see something here. I cannot see, what is happening because red, double green, red, double green, red, green, double red, green, double red, green. What is happening? I don't know, right? What should I do? 3 minutes. Boom. All red. One green. Now it is forming. Now where it will flows, that is the question. Correct? Again, 5 minute even clear. Two red candles, no worries, simplicity at its best. It has taken a support here, it has went up, now it is coming back down all the way. I don't know where it will go, but it will somewhere around this particular position, it will take a support. Okay. Then this is this scenario. 5 minutes. That means whatever time frame you want to play, okay, you want to trade, that time frame plus a time frame above it, that those two time frames you must target. Okay. Why a time frame above it? We will discuss it some other day, maybe in the next particular session. ये क्या करना है आपको? आपको ये करना है कि अगर आपका टाइम फ्रेम 1 दिन का है, आपको 1 दिन में कन्वर्ट कर देना है अपने आप का पोज़ीशन, राइट? आपको ठहरना नहीं है मार्केट में. You don't want to hold on to your position, right? You don't want swap, right? So what will do? You will select this particular time frame, 1 minute. You will look at this, you will analyze, you will do something, draw some levels, take your position, and you will not only look at 1 minute but you will also look at 5 minutes. आपको सिर्फ 1 मिनट नहीं देखना है, उसके एक एक 1% ऊपर या एक पोजीशन ऊपर जो टाइम फ्रेम है, जैसे 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, है ना, इसको भी देखना है. व्हाट इज हैपनिंग ऑन 3 मिनट्स, व्हाट इज हैपनिंग इन 5 मिनट्स, दैट ऑल्सो must be looked at. So this was our position. Look at this. This is live market. I'm not doing anything. Okay, this is not a made up video. Okay, this is live market and it is happening straight out. Okay, boom, boom, boom. It has went down. Maybe somewhere around this particular position, support will be happening. Now, why, sir, this has happened? This happens. Again, this might happen again here also. You cannot predict 100% market accurately, okay? But you can come close to it, right? You cannot fly too close to the sun, but you can try, okay? So that is the scenario. Thank you very much, everyone, for joining in. Do we check multiple time frames, right? Okay. So the position that you're working on, you must remember that position. आपका एंड गोल आपके सामने होना चाहिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए बाकी चीज किसी चीज से, राइट? आई एम टेलिंग के मल्टीपल टाइम फ्रेम चेक करो, उसमें क्या होगा, आप एक टाइम फ्रेम देखोगे, आप दूसरा टाइम फ्रेम देखोगे, तीसरा भी देखोगे, चौथा भी देखोगे, पांचवा भी देखोगे, आपका दिमाग वहीं पे फ्राई हो जाएगा, राइट? योर ब्रेन विल बी completely messed up, you will be confused as to what to do, which time frame to select. So keep it simple. Okay, one time frame that you want to work on and a time frame above it, okay, or two time frames above it if you want to be so precise and perfect. Okay, don't go on checking every single time frame possible, then you will go mad and then you will blame me. Hey, sir, what have you taught? I have gone mad. I'm just kidding. Okay. Let's end this broadcast today. Thank you very much for tuning in, everyone, and take care and happy trading.